KTS 2.0. In this particular session is the third session, and we are celebrating the month of the cyber security. Under that, we are having this session, and the title is really very interesting, and it is somewhat triggering that we have used many controls, but control security, we will see that how the control alt and control secure we are going to do, and what are the challenges associated with this. So formally, I will welcome you all in this virtual session. And in brief, if I say, such kind of sessions or such kind of initiatives cannot be materialized on the ground until unless you are having support from your authorities and leaders. So we are thankful to our Honorable Vice Chancellor, Professor Uma Kanjilal ma'am, for encouraging us continuously and providing support and impetus to do such kind of activities. Her formal approval for such kind of activities provide us facility to do these things. And next is obviously, in fact, this KTS idea is brainchild of Professor S.S. Rawat ji and Professor P.V. Suresh when Suresh sir was director. So from that, we are continuously organizing such sessions, and this is in total 11th session, if I am not wrong. So far we have conducted 10 sessions, and this one is the 11th one. And in second series, this is the third session. And in this process, school faculty members has continuously contributed and supported to conduct these sessions and organize the activity. And our backend team also worked very hard to reach out to very large number of students as well as to our different colleagues from headquarter and regional centers. And that is the reflection that there is very large number of participation here. Only we are, in fact, we are witnessing that such sessions are not attracting very large number, but the kind of academic content we try to deliver, or we invite the experts from different domain of the industry, as well as we take the topic in such a way that it caters to all, whether it is core computer science student and majority of the time to the general audience also, that what are the things that they have to take care while they are using ICT or they are being part of the ICT ecosystem. So in this series, our expert, Mr. Mahipal Waldia ji is here. Before I introduce him, I will request Professor Sandeep Singh Rawat ji to put his opening remarks, and then formally we will invite expert to deliver the lecture. So over to Rawat sir. Thank you very much for the brief introduction. I think you have very well you have started the actual theme of our this series. So namaskar everyone, and a very warm welcome to first of all our Honorable Vice Chancellor. Because of her busy schedule, she could not join. Professor Uma Kanjilal Madam to the special session, which is titled as Control or Secure, a cyberspace culture we must adopt, which is being organized as part of Cybersecurity Awareness Month. I think everyone knows that October month is actually celebrated as Cybersecurity Awareness Month. And we are very deeply grateful to our Honorable Vice Chancellor for her constant encouragement, visionary guidance, and valuable time in supporting us throughout the planning and execution of these important events. A special welcome to our distinguished speaker, Mr. Mahipal Waldia ji, who is a manager IT at Jipaigo John Hopkins University, USA affiliate, who has graciously accepted our invitation to share his insight on cultivating a cyber safe mindset on today's digital world. I also extend my heartfelt thanks to all the directors of various schools, divisions, centers, and regional directors, as well as my colleagues from the School of Computer and Information Sciences, including faculty members and the staffs from the schools, other schools of IGNOU.
Also, a very sincere and warm welcome to all the enthusiastic participants, which includes the students, professionals, academicians who are joining us for this important session. This event, as Professor Mishraji has already mentioned, this event is basically a part of our continuing effort under the Knowledge Transfer Series 2.0, which basically aims to foster the exchange of ideas and expertise in emerging areas of computer science and technology. So आज basically अगर हम बात करेंगे, we are gathered here for the very very important topic of today's हमारे जो busy schedule हो चुका है. I think if you talk about cyber suraksha and if you talk about awareness, I think this is very very important topics, because in today's digital world everyone is using internet, right? Everyone is somewhere, they are part and parcel of the social media, they are part of online banking, and they are using various e-services, and when definitely they are helpful up to some extent, right? But at the same time, like we have witnesses a lot of these cyber crimes are happening, a lot of people are these cyber criminals are actually taking our data away. So today's theme, control all secure, a cyber safe culture we must adopt, is basically emphasizes the need to reset our digital habits, take the control of our online presence, and secure our data and system through awareness, vigilance, and responsible digital behavior. So basically, the cyber crimes, I think every day they are using new techniques. Like you must have heard about digital arrest, and they are using various new ways to take our data away, take our sensitive data away from us. So I personally believe that whenever we talk about this personal data, or we talk about banking information, or we talk about our own personal data, I think the first steps in these awareness, these cybercrime, is the awareness of knowing what exactly is going to happen. So I think everyone, we must remember, we should never, I think every day we hear this thing on a lot of, medias, whether it is on social medias or radio channels. I think you should never share your password, never share your OTPs, never share your, personal data on social medias, never click on any suspicious link, and definitely we must update our mobile phones and computers with the latest antivirus. And in case if there is any crime, कुछ cyber घटना हो जाती है, तो I think everyone, we must should know about this cyber helpline number, that is 1930. So immediately one should gather all the related data and inform these people, or they can also visit the website like a cybercrime.gov.in, which is an initiative of our today's government, and they are actually helping us to to solve these kind of problem up to some extent. So I'm very much confident that today's session will be enlightening, inspiring, and will be strengthening our collective resolve towards the building a secure digital future. I wish this event a grand success, and extend my best wishes to all the participants. Over to you, Mr. Ji. So thank you, Professor Rawat, for your nice word and summarizing the thing what we are expecting from this session. And definitely, before I invite and introduce my expert, let me tell you that continuously we will be in touch with you all with various other topics in the future also. So be ready, and we will be there to meet you again and again on various aspects related to ICT and application of ICT. And obviously this session itself is very timely, as well as it is very important session, because we are witnessing a lot of difficulty in using ICT and its application, and almost on daily basis we hear from here and there that people are either trapped in some IT fraud, or they are trapped inside some IT
mishappening or some kind of activity which should not be happening, and majority of those activities happens due to our negligence or our unawareness. So it is very important that if we are getting the fruit, we must know that how to nurture it and how to utilize the thing which is available with ultra care and security, because it is something which if goes from your hand, sometime it goes 100% and it is not very easy to catch and reverse back and repair it. So we should be careful. And as the topic suggests, control alt secure, this is all right up to this point, but after that a cyber safe culture we must adopt. So that is somewhat which is really a reflection of our day-to-day activity, because whatever we reflect, we perform, it is totally based on our cultural development or cultural ecosystem. So how actually we are going to learn something new from our expert in this cyber era or ICT application era, that how actually we should make ourselves secure, and we must try to develop a culture that provide us better security options to utilize the ICT services. And Mr. Mahipal Valdiaji is very prominent speaker. In fact, many of us have previously heard him. He is not only knowledgeable and expert in the area, his way of presentation and his style of conveying the things is very effective. And I think we all will have a witness of that, as well as we will be in position to learn something out of this session. So I welcome you, Mr. Maipal ji, and your expertise will help us definitely in getting the things in ICT security area. So welcome you, sir, for the session, and floor is yours. Thank you. Thank you so much, MP Misraji. So let me put my slide first, so before I just move ahead. So you may share your slides, yes. So I hope my slides able to just see, everyone able to see my slides, right? Yes, yes. Okay. So before I start, so it's a time of gratitude, to pay the gratitude for IGNOU. So first of all, I congratulate IGNOU for becoming the #1 university in consecutively in second time. So I will start with this, and very congratulations to everyone who are just working hard for this university. And I would like to thanks Honorable Vice Chancellor Professor Umakant Lalji, so for inviting me for this session, and also would like to thank Professor Sandeep and Professor MP Misra for just setting up the stage for me. So I'm just moving ahead on this slide. So just give me a second. So you all know my name is Mahipal Waldia. So I'm basically a cybersecurity influencer, and control or secure. Why this topic is, then we will see in the coming slides. So a little bit about me. So I am here in the technology sector from last 25 years, and work with the different teams, different organizations, starting from the government sector to the MNCs and the corporate and not-for-profit sector. So I work with everywhere. So I am satisfied in the different certifications, also MCSC, GDPR, PMP, and other cybersecurity leadership portfolio as well. And my mission is basically the in line with the country's mission, that security first and everything is second. And every citizen in the organization has some kind of responsibility. I just wanted to emphasize on the shared responsibility, because cybersecurity is not only the one person's responsibility, it's a shared responsibility and everyone's responsibility. So my mission is to protecting the 3 C's, like communities, companies, countries, obviously at the world. So this is not seen as a technical burden or that the technological burden, is a shared responsibility, I told you. So let me start it. So today's agenda. So I promise you I will not bore you. So I will make it interactive session. I will make it
very fruitful session, and you must get something from this session. So the agenda is, there are two agendas here. The first is my agenda, and the second is your agenda. So my agenda, you all know that fulfill the purpose of being invited me in this reputed organization, and I want to take a step towards the cybersecure culture and the environment at the IGNOU University. And it's your agenda to keep an eye on the following three things, to find a way to grab them. And the only way to do this is engage yourself in the session. And what are those? These are the 1, 2, and the third one. So how? We'll see ahead. So this is our agenda and topic, and these are the topics I am going to cover. The cybersecurity one, why is everyone's responsibility in this digital era. The second one is DPDPA. This is also very important part. We'll come to know why, and cybersecurity in the age of the AI era. So this is also very important. And the last one is the learn, play, and fun. So I will run a quiz in the Kahoot of 10 questions, which I will just cover in these topics, and the top 3 winner will get some goodies or prize from us. So be attentive in this session, and be proactive in the session, and then ask the question in the chat box, and we'll definitely try to just answer this question at the end of the session. Okay, we have kept some time for that also, so we'll have the question and answer session as well. So moving ahead. So do you know every 39 seconds a cyber attack occurs somewhere in the world? And are we really prepared for that? Are we really prepared for that? So some people may be shocked at 39 seconds. कितने होते हैं 39 seconds? 39 seconds, 3, 9. So are we truly prepared? Let's see. So when we talk about the cybersecurity and when we talk about the cyber attack, the number one term comes as a phishing. So do you know what is phishing? I'm sure many of you already knows about the phishing. If we tell about that, the phishing is a kind of the fraud practice, basically involve email. Somebody is sending email purporting to be somebody else, an authorized person, and sending mail to companies or the individuals and trying to steal the data, bank detail, UPI detail, academic detail, and your password and IDs are. So are you able to understood this or not? So some people may understood, but some people may not understood. But so usually what I do a time machine training. So you must be wondering that why time machine training is. I have one question ahead. मैं एक आपसे question पूछूंगा. So I will try to just be in the English language so that it will be more interactive. So I have one next question where you will have to answer this. Who was the first hacker of the world? Some of these people who knows me, though they know the answer, but you can give your answer on the chat box. Okay, if you know that who was the first hacker of the world, and don't Google, because you will not able to find this answer in the Google. So you will have to use your mind here. So who is the first hacker, or who was the first hacker of the world? So some might able to answer it, some might not able to answer it. So you can answer on the chat. So yes, see, Ravana is the first hacker, my dear. रावण ही पहला हैकर था जिसने सीता माता का हरण किया था. कैसे? इन प्रपोर्टिंग साधु का भेष बदल के. फिशिंग में क्या होता है, किसी और का भेष बदला जाता है, किसी और को समझा जाता है. तो रावण ने साधु का भेष बनाया, साधु का भेष बना के चित्रकूट में आया, और वहां पर आकर के उन्होंने सीता माता को उनको बोला कि भाई मैं साधु हूं और आप मेरे को भिक्षा दो. और आपको पता होगा, मेनी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द आईटी एंड यू सी दिस फायरवॉल, एंड आपको लग रहा होगा कि फायरवॉल अभी हमने कुछ सालों में इन्वेंट करी है, लेकिन माय डियर फायरवॉल तो आदिकाल से है. देखिए फायरवॉल लक्ष्मण जी ने खींची थी, एंड जो रावण जो हैकर था उस फायरवॉल को क्रॉस नहीं कर पाया था. इसीलिए हम लोग आपको कहते हैं कि फायरवॉल को क्रॉस करके किसी लिंक पर क्लिक मत करिए. अगर आप लिंक में क्लिक करते हैं और फायरवॉल क्रॉस करते हैं तो आपके अकाउंट का हरण हो जाता है. जैसे सीता माता का हरण हो गया था, ऐसे आपका अकाउंट का हरण हो जाता है, आपका अकाउंट बैलेंस 0 हो जाता है. सो नेवर एवर क्रॉस दिस लिमिट. कभी भी अननोन किसी सेंटर से अगर आया हुआ कोई लिंक,
some of our students are from abroad, so it will be Okay. difficult for them to get Okay, the okay, English. okay. I will try to just convert in the English also. Yes. So Okay. Thank basically, Ravana is the first hacker. Okay, so who basically steal the Sita Mata from the Chitrakoot, and the reason why he is able to succeed, that the Sita Mata crossed the firewall. Firewall means the Lakshman Rekha which has been drawn by the Lakshman, his brother-in-law, has been crossed by Sita Mata. So that this is the reason. No problem. This is the next one. You might be thinking that this is the only thing in the mythology then which is the hacker. If we just choose the Christian mythology, so there is also one hacker. So Genesis chapter 3 of the Bible, recounting the story of Adam and Eve. They were living in the Eden garden, enjoying in the Eden garden, and they are happily living there. So serpent came up and उसने लालच दिया. Basically he just greet them, if you eat this fruit of the from the center of that place, then you will able to just become the god, while the god has just told them that do not touch any fruit on that tree, but they still touch the fruit and they eat the fruit, and after that they went to the sin, and they have to leave this paradise, and they stuck in the trap of the serpent. So in every mythology there must be one hacker. Okay, I just took the two examples here. So you must be heard about many things, but I don't know that you heard about the DNS hijacking or not. DNS hijacking. So I will just take one small story for that. Suppose you are in the queue of a mall. The phone, your network has gone. Okay, and your network has gone, then at the same time a person who is just behind you has offered, if you don't have the internet, then I can offer you the internet. So you immediately convince that, oh, what a kind guy, कितना अच्छा लड़का है ये, तो मुझे internet दे रहा है. So they started taking the hotspot from that guy, and then paid the amount of their, and till that time there is nothing, there is all okay. And when then that person or three tongue means रिंग की आवाज आई इस तरह से, and she found that her payment has gone, 30,000, 40,000, 80,000. Okay, all gone. So how this gone? Because this is just because the DNS hijacking. How this happened? The person who gave the hotspot at the shopping center is not a normal guy. He's a hacker. He gave you the kind of the permission to that access the internet, but at the same time he hacked your phone also. So all the OTP, everything is now on the hand of the hacker. So whenever we told everyone, whenever there is a option to just pay UPI to any of the shopping complex or any of the shop, do not use any other Wi-Fi and do not use any open Wi-Fi. So no means no. This is the only rule. You need not to take any Wi-Fi from any open Wi-Fi from anybody. So this is the golden rule we need to follow. So why we said that the password is strong? Because Professor Sandeep and the Professor MP Misra also said that we have our password and these are very wrong. Let's show how many people have the password is strong. So you can just take the screenshot of that also, password.kaspersky.com. If you go there, you will find a column that where you can put your password. आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए. अपना पासवर्ड नहीं भी डालेंगे, डोंट वरी, दिस पासवर्ड इज नॉट कमिंग टू मी. आप पासवर्ड डाल भी देंगे तो मेरे पास नहीं आने वाला पासवर्ड. तो आप पासवर्ड कुछ और डाल दीजिए, कुछ चेंज करके डाल दीजिए. देन यू विल सी, इफ यू फाइंड दिस, डोंट वेट, इट्स नाउ योर चांस टू चेंज द पासवर्ड. और अगर आपके पास ये आता है कि oops, your password would be cracked faster than you can say oops. अगर oops आ गया तो समझो कि आपका टाइम आ गया कि आपने पासवर्ड को चेंज करना है. अदरवाइज your account is ready to hack anytime. So be ensure that.
So do you know your data is on the sale on the dark web? अगर आपको लगता है, if you think you are a Superman or you are a Wonder Woman, या फिर आप अपने आप को शक्तिमान समझते हैं, मुकेश खन्ना वाला जो शक्तिमान सीरियल आता था, कि आपको लगता है कि आपका पासवर्ड कोई चोरी नहीं कर सकता, nobody can steal your password. आंखें खोलिए, open your eyes, break your math and just type the https have you been pawn.com. आप देखिए कि आपका डेटा कहाँ पे बिक रहा है. You will able to see that कि आपका डेटा कहाँ बिक रहा है और कैसे कैसे बिक रहा है. उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा. These are some examples I tested for you, that when I put some of the email ID, then it said that these are the location where your password has been breached, or your information has been stolen, or your information is ready to sell. Okay, the only action you need to do right now is, if you find any such kind of thing, then you need to change your password and set up the two-factor authentication. Two-factor authentication. This is one of the important topics I'm going to cover later on. So basically, you need to follow these kind of steps for the phishing to safeguard your family and yourself from the phishing attack. Look out the spelling error, grammatical error को देखना है. Check the URL before you type in the link. Never ever enter the data in the website that student asks. कई बार क्या होता है, वेबसाइट में कुछ डेटा मांगा जाता है. You fill the everything. So don't fill the everything. Only fill the necessary data here. Change it if you realize it just reveal your password is important. आपको लगता है कि आपका पासवर्ड अगर कहीं चोरी हो गया है या आपको कहीं रिवेल हो गया है, तो just change it immediately. So never use the same password on more than one side. आप कभी भी अपने पासवर्ड को एक साइड से दूसरी जगह पर कभी यूज मत करेगा. So use magic. So why I said magic? I am covering the magic part at the end. Okay, just wait for the magic also, and turn two-factor authentication. This is also I am covering. One question: if you receive an email from the link that director SOCIS with the subject line important announcement for staff, please click on the below link urgently and submit the required detail and to attend the international workshop. इग्नो ने एक इंटरनेशनल वर्कशॉप करी थी मुंबई में, कर रहे हैं मुंबई में, उसके लिए आपको नॉमिनेशन मांग रहे हैं. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे. तो कौन कौन इस ईमेल पे एक्शन करेगा? प्लीज राइट ऑन द चैट. व्हाट विल बी योर एक्शन? So you can type fake. Okay, somebody said fake. Oh, you don't want it to go to the Mumbai. Oh, very good. Good response. So basically, why fake? Because you can see the spelling of IGNO is wrong. So hacker and the person who are phishing, doing the phishing attempt, do this only. IGNO, the spelling of IGNO is changed. So you need to see very minutely that these kind of spelling. And if you see that during the exam, exam में आपके पास IGNO से मेल आती है, subject line high priority, process the attached invoice urgently. So will you able to do that or not? Will you able to do that or not? Will you process this invoice? No, nobody will process. The reason behind this is because the first observation, it looked like the suspicious email because email is not from the igno.ac.in. It's not from the official email ID. Second, the only name matches with the institute, but the domain is different. And third observation is it shows the urgency. जहाँ पे भी urgency नजर आते हैं. If you think that the person who is sending email or who is calling over the phone is showing the urgency, that means something is fishy, something is wrong. So you need to be ensured that before taking any step. So cyber security. So we said never click on any suspicious link, never ever. So आपका क्वेश्चन होता है, how do I know the suspicious link? अब मैं तो कहूँगा मुझे अगर क्लिक करने पे पैसा मिल रहा है तो यार मैं तो बिल्कुल क्लिक करूंगा उसमें, मुझे क्यों सस्पिशियस लगेगा? अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ पैसा मिलता है तो मुझे सस्पिशियस नहीं लगना चाहिए, राइट? मैं तो क्लिक करूंगा, नॉर्मल ये रहता है. बट never trust on those phone call on the videos immediately scare you or demand something from you, और आपको greed देते हैं, लालच देते हैं. तो फ्री में क्या मिलता है? देखो फ्री में बहुत ये मिलता है, ये फ्री वो फ्री सब फ्री. फ्री में केवल और केवल एक चीज मिलता है, वो है वायरस.
in free we can get only virus, nothing else. So don't be in the trap of the free. So free is equal to the virus. So you'll have to just be more cautious about that, because those could be the deepfake audio, deepfake videos, digital arrest kind of the trap. कुछ भी हो सकता है उससे आगे को. So never ever just fall in the trap of such kind of things. Because we use laptop, phones, tablet, we should be vigilant and always be up to date about the new threats, risk in this AI enabled world. अभी तक तो मैं स्पेलिंग के लिए कह रहा था कि स्पेलिंग चेक करनी चाहिए, but in AI enabled world I will tell you that it's more scary, more dangerous, and more you need to be more vigilant. So that's why we said stay awake or keep awake. जागते रहो, जगाते रहो. आपने सुना होगा पहले उसमें पहले जब क्या ये सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होते थे तो एक बंदा होता था जो कहता था जागते रहो. तो इससे काइंड ऑफ थिंग जागते रहो एंड जगाते भी रहो लोगों को, ताकि कि जो नए मार्केट में थ्रेट आ रहे हैं, जो नए मार्केट में जो इश्यूज आ रहे हैं, जो नए मार्केट में नए तरह के डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल हैकिंग एंड DNS हाईजैकिंग, ये सब आ रहे हैं, तो इसके बारे में सबको पता होना चाहिए. सो व्हाट एल्स वी कैन डू टू अवॉइड ऑल दिस थिंग? This is the one thing. A new era of the protection for our purpose and mission, cyber secure culture and environment. क्या है ये? एक एंटीक ताला चाबी है और क्या है, राइट? ताला चाबी. तो what I'm going to share, multi-factor authentication, two-factor authentication and the magic आपको बताऊंगा क्यों है magic वो करके. Because why I am saying this multi-factor authentication, because every person is using UPI, every person is using the online banking from their laptop, from their phone. अगर आपका फोन compromise हो जाता है तो आपका बैंक अकाउंट compromise हो जाता है. Everything gets compromised. So you need to be more cautious about this. So you need to understand that why this is MFA, multi-factor authentication and two-factor authentication. Again टाइम मशीन, मैं आपको टाइम मशीन में ले जाता हूँ, बार मैं आपको टाइम मशीन में ले जा रहा हूँ, और टाइम मशीन में आपको कुछ साल पीछे ले जाऊंगा. कुछ साल पहले की बात है. वंस अपॉन ए टाइम द पासवर्ड इज एवरीथिंग ऑनलाइन. आपने इस तरह के कंप्यूटर में भी काम किया होगा, जो संदीप रावत जी और MP मिश्रा जी आप लोगों ने भी काम किया होगा, सुधांशु जी आप लोगों ने भी काम किया होगा. तो इसमें क्या होता था, हमारा पासवर्ड ही होता था. हमने इफ यू पुट द पासवर्ड देन दैट एवरीथिंग. सो नोबडी विल एबल टू जस्ट अनलॉक द लैपटॉप और द कंप्यूटर फ्रॉम विदाउट द पासवर्ड. सो वी वर वेरी हैप्पी. Then suddenly hackers enter into the scenario. Hacker ने देखा कि ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे गुड अपॉर्चुनिटी. They are able to get the access of the digital system easily. So they made a program and they made a different kind of program. बहुत सारे programs हैं, keylogger, there are number of things. So उसके बाद क्या होगा, hacker happy and we guys are just like this only. कि अब क्या करें? Then 2FA and MFA was introduced. जब 2FA and MFA when introduced, this was a real game changer and the headache for the hackers. It's a game changer for us. Why? I will tell you. And it's a headache for the hackers. You can see that in the pictures also. The hackers are now very worried about this. How? Let's understand what is 2FA and MFA. हमारे घरों में होता है, हम लोग क्या घरों में करते हैं, हम ताला लगाते हैं, दरवाजे पे हम लोग एक ताला लगा के जाते हैं. नॉर्मली क्या होता था, when we just lock the door with the one key, then it is very uncertain. Many of the time it might be possible that somebody came and door को unlock कर दिया और तोड़ दिया और अंदर घुस गया. Then what we did, we started दो टाइप की चाबी लगाना शुरू कर दी. एक सेंटर लॉक एंड देन एक नीचे जो ग्राउंड में लगता है उसमें ताला लगाते हैं, ताकि अगर है एक भी I think there is some issue with the internet connection, so just wait for some time. Yeah. Then we enter into the house. So this is a two-factor authentication basically. Two-factor authentication, you understood? We need the two key. One is the actually, another is the Last 1 minute you was actually not there. Like there was some internet issue, it seems. Just 30-40 seconds. Yeah.
30-40 seconds. I will just go back. Now it's fine. Yeah. So Yes. you are here, 2FA. I Yes. think, yeah. So earlier we used to use the two-factor authentication to, no, not two-factor. We will start with that. Once upon a time in the time machine, we started the computer in 80s, 90s, and then when we use the computer, we just put the password and get into the system. तो उससे क्या होता था, हमें बड़ा रिलैक्स मिलता था. वी पुट द पासवर्ड इनटू द सिस्टम एंड वी वर्क इन द सिस्टम एंड वी एंजॉय दैट. ओके, देन हैकर्स एंटर इनटू द सिस्टम. हैकर ने क्या किया, ये तो बहुत आसान है और दे मेड सम की लॉगर्स काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड दे हैक द अकाउंट एंड दे वर हैप्पी एंड वी वर लाइक दैट. Oh, what happened to us? So am I audible now? Screen is visible? Can somebody? Yes. Yeah. Okay. It's like that only. Then 2FA and MFA introduced. And what happened with the 2FA and MFA? So the two-factor authentication come in two password. One is the password, another is the OTP. So when we put both of them, then we were able to enter into the system. तो उसके बाद क्या हो गया, हैकर के पसीने छूट गए, क्योंकि नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू जस्ट हैक द सेम कंप्यूटर एंड द फोन आल्सो. सो टू अंडरस्टैंड दिस, पहले हमारे घरों में क्या होता था, एक दरवाजा होता था, हम एक ताला होता था, हम ताला लगा के चले जाते थे. देन वी केम अप, तो कोई ताला तोड़ करके अंदर से सामान चोरी करके ले जाएगा. सो देन वी स्टार्टेड, एक सेंटर लॉक लगाते थे, एक बॉटम लॉक लगाते थे. तो देयर आर टू काइंड ऑफ. तो हम एमएफए जो है, जो 2FA है, वो हम आज से नहीं यूज कर रहे हैं, हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, जब दो ताले लगा के जाते हैं. तो इट इज सिमिलर टू दैट ओनली. तो जब भी हम वो दो की लगाते हैं, की में क्या होता है, एक की लगाते हैं, एक ओटीपी आ जाता है, तो देन आवर डोर विल ओपन, so we will able to get into the room. So MFA is the full security system basically. MFA और 2FA में क्या, 2FA में only two ways to open the system. One is the key and मेरे पास क्या होता है, कई बार पासवर्ड, कितने पासवर्ड मैं याद करूंगा. Again, yours paused actually from 2MF. Yeah. 2FA and MFA. Oh. Yes. I'm paused. Like there was an internet issue, but you can start from there. 2FA. Okay, 2FA. Okay. What I'm saying, 2FA. Okay. Next one. Yeah, this was covered. This one. No, one next. Yes, this. No. Back set. Yeah. Yeah, Okay. This one. Basically, this is the difference between the MFA and the 2FA. 2FA, two-factor authentication, MFA, multi-factor authentication. In the two-factor authentication, we have one key, means one password, and one OTP. Then we will able to get into the system. Either it's a banking account, UPI detail, or a laptop, or the phone. And when we talk about the MFA, we have a multiple ways to enter into the system, like face recognition, biometrics, passcode. There are number of we can draw the pattern also. So there are number of things. So that is called the MFA, multi-factor authentication. So when it comes with this multi-factor and the two-factor authentication, hackers की बहुत हालत खराब हो गई. उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया उनको हैक करना और वो सब करना. But still they have a new ways to do that, and we also have the new ways to just protect ourselves. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हाउ मेनी पासवर्ड्स शुड आई रिमेंबर, आई लॉग इन मैनी ऐप. सभी का ये इश्यू होता है कि मैं, ये पेन हो जाता है कि मेरे पास 10 साइटें हैं, 50 पासवर्ड मुझे याद रखने हैं, मैं क्या करूं अब, कि किस पासवर्ड को याद रखूं. इसीलिए मैं सबके पासवर्ड एक ही रख देता हूं, चाहे हैक हो जाऊं. तो दिस इज द पेन बेसिकली. तो फॉर दैट पेन हमारे IT के इंजीनियर्स हैं, उन लोगों ने कुछ सोचा कि हम क्या करें करके. तो उन्होंने एक मैजिक किया, और वो मैजिक था पासकी का. So you will start using the passkey. Now passkey is very much popular in the industry. तो passkey क्या करता है, यही मैजिक है जो मैं बता रहा था. आपको पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है. Passkey is the passwordless authentication to your login on any application, any portal. For authentication, it uses your device-based key like biometrics, face recognition, etc. अगर मैंने passkey को अपना अगर सेव कर लिया, तो across the system वो seamlessly sync हो जाता है, और वो उसको मुझे पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाता है सिस्टम when he found that passkey. Like usage of biometric scan logs,
सिंक iCloud की चेन, iCloud से की चेन वो हो जाता है। और उसको ऐसा नहीं कि हैकर भी ले जा सकते हैं। हैकर अगर सपोज उसको ले भी गए तो बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर सिस्टम, आप उसको फिजिकली फोन को भी लेके जाना पड़ेगा तभी वो खोल पाएगा उसको, देन अदरवाइज ही विल नॉट एबल टू जस्ट एक्सेस इट। वर्क्स विद द सिंक एंड सिंक विद द डिवाइस अक्रॉस द थिंग। तो वाई पास की, नो टाइपिंग, जस्ट टैप द स्क्रीन एंड फिंगरप्रिंट करिए और आप लॉगिन कर पाएंगे। नो फिशिंग, पास की कांट बी स्टोलन विद द फेक वेबसाइट एंड ऑल। आप अपना पासवर्ड डाल दोगे लेकिन पास की तो नहीं डालोगे ना, पास की तो डाल ही नहीं सकते बिकॉज यू डोंट नो द पास की। पास की इज इंडिविजुअली बेस्ड ऑन द सिस्टम एंड ऑल, सो ईच पास की इज यूनिक फॉर ईच साइट, सो इट्स अ वरी फ्री। तो आपको जो ऊपर रेड में प्रॉब्लम आती है कि मैं इतने पासवर्ड डालूंगा, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट एंड दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज इन द फ्यूचर। Cyber security trend, these are the trends basically. AI phishing is now the coming new trend. उसमें क्या, fear and greed, दो ही एक चीजें होते हैं, fear and greed, ये मेन है। आपको लालच देंगे, आपको डराएंगे, उसी से ही आपकी फिशिंग होती है, उसी से डिजिटल अरेस्ट होता है, उसी से सब कुछ होता है। So how AI and cyber security can respond this, वो हम आपको बताएंगे अभी आगे। And deepfake, what is deepfake? And deepfake is very very dangerous again. And digital arrest is also one of the dangerous thing which is happening around the world, specifically in the Asia region. And UPI fraud, AI के pro and cons क्या क्या है वो भी मैं आपको cover करूँगा। And the prompt injection, this is also one of the topics. So I am going to cover the digital arrest. So am I audible now? Yes. Yes, great. Okay, so I'm going to cover the digital arrest first. So this is the world, you can see that कितना खूबसूरत हमारा देश है, हमारी दुनिया है। But what happened? Digital arrest came into the picture, और digital arrest ने सारी दुनिया में हाथ पांव मारे, and then एशिया पैसिफिक रीजन में बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से फैला हुआ है। Is a kind of the disease. So what is exactly digital arrest basically? Digital arrest, because a lot of people heard about this term digital arrest, so people thought, yeah, what kind of digital arrest this is? So it's a kind of cyber fraud, एक cyber fraud होता है। So the accused video call and poses as a law enforcer, जो हैकर होता है या जो बैड प्लेयर्स होते हैं, दे पोजेज एज ए लॉ इन्फॉर्मेंस ऑफिसर या सीबीआई के या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसीज होते हैं, उनके ऑफिसर अपने आप को बताते हैं, एंड देन थ्रेट द पीपल दैट यू विल बी अरेस्ट अगर आपने ये सब नहीं किया तो, एंड योर अकाउंट हैज बीन इन्वॉल्व इन सच एंड सॉर्ट फ्रॉड एक्टिविटी। सो दिस इज ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो ये चलता है। आपने इसमें क्या करते हैं डिजिटल अरेस्ट में? बेसिकली डिजिटल अरेस्ट में दे विल मेक यू वेरी हेल्पलेस। आपको कहीं बाहर की दुनिया से सारा कॉन्टेक्ट आपको खत्म कर देंगे। आपको एक ही जगह पर, आपको केवल उनके साथ कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा। 24/7 आपको वो वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल में आपको अपने पास रखेंगे, एंड यूर कॉन्टेक्ट विद द आउटर सिस्टम विल बी फिनिश। तो उस तरह से करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ डिजिटल अरेस्ट हैपनिंग इन अराउंड अस। सो आप लोगों के पास भी, आई एम श्योर आप लोगों के पास, सबके पास कोई ना कोई केस होगा, या आपके अराउंड में कहीं ना कहीं केस होगा। A digital arrest is basically a scam where fraudster impersonate law information officer, जो मैंने आपको बताया था। It underscores the importance of verifying identity and being cautious with the unsolicited communication. So आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये deep fake क्या है। I will just cover the deep fake audio video in the coming slide. जो fraudsters होते हैं वो कैसे इन्वेट करते हैं, विक्टिम को कैसे ट्रिक करते हैं, एंड इन्वेट पुलिस लाइक, वो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के आपको कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। आपको लगता है कि इन द फर्स्ट इंस्टेंट यू विल सी दैट दिस इज द पुलिस ओनली, बिकॉज इन द फ्रॉम द यूनिफॉर्म द नॉर्मल पर्सन will think that this is police only, and they play the police siren also. They show you the fake ID also, and they use the walkie-talkie and then siren, and then they will try to basically make the fear environment around you. तो इस तरह का ये डिजिटल अरेस्ट में ये प्रोसेस होता है। और वो क्या डिजिटल अरेस्ट में हाउ दे यूज द थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट, किसी और का अपना भी बैंक अकाउंट नहीं यूज करते, किसी और का बैंक अकाउंट यूज करते हैं, और जो फ्रॉडेंट बैंक अकाउंट होता है उसके थ्रू वो पैसा ट्रांसफर कराते हैं। लाइक इस तरह से वीडियो कॉल करेंगे। दिस इज द डीप फेक एग्जाम्पल। आपका बच्चा नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चे की फोटो लगा के वीडियो में आपको पता भी नहीं चलेगा वो है करके। आई हैव वन एग्जाम्पल ऑल्सो, लाइव एग्जाम्पल ऑल्सो, आई विल शो यू इन द कमिंग स्लाइड। उसको आपको बताएंगे कि वो आपका बच्चा है और आपका कॉल कर रहा है, जबकि आपका बच्चा तो स्कूल में पढ़ रहा होगा। सो दिस वे दे कॉल इट।
एंड जो बाहर से इंटरनेशनल नंबर से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो ट्राई टू नॉट टू जस्ट पिक अप until unless you know that this is really for you. या आपके अकाउंट में कई बार कहते हैं कि आपके अकाउंट में इतने 1000 रुपए हमारे गलती से पड़ गए हैं, नाउ यू प्लीज ट्रांसफर अस बैक टू अस, you please just see it carefully. So I can just give, if anybody need, we can give the specific session on the digital arrest part also. So looking at the time, interest of the others time, and then I'm just moving quickly here. So like this, they faces as a CBI and sometimes police officer, sometimes the judge, Supreme Court judge also. And these are the ways they transfer the money. SWIFT हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, कैश विड्रॉल करते हैं, ATM से विड्रॉल करा लेते हैं, गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड एंड हवाला आल्सो. These are the form how they take this money. यूज केस में अभी कुछ साल पहले की बात है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बॉरोन थे और 70 मिलियन रुपीस, अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ रुपीस का फ्रॉड हुआ था उनके साथ. 7 करोड़ रुपीज उनसे ले लिए थे, उनको 2-3 दिन 4 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा उन्होंने, और 7 करोड़ रुपए उनसे ले लिए थे. And but our police was very efficient at that point in time, and they were able to recover the 5.3 crore out of 7 crore. But still, the 7 crore limit, they were, how you could understand the intensity of this thing, and how these fraudsters and these bad players are able to just access this money from that person. And the recent use case, the history of India digital arrest, this is the one of the biggest, 23 crore in one of the India largest digital arrest. Okay, one from in Delhi only. Okay, over 6 weeks, the scammer exploited the psychological tactics and posing the law information and telecom officer to manipulate him into the transferring that asset. तो सोचो 23 करोड़ रुपए 23 करोड़ रुपए कैसे ट्रांसफर कर दिए किसी ने. तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग दिस इज. बेसिकली इसका एक ही फंडा है, जो डर गया समझो फंस गया. If you are in fear, then you are in the trap of that scammer. जो डर गया समझो फंस गया. गब्बर ने बोला था ना, जो डर गया वो मर गया. ये नहीं, अभी उल्टा चेंज हो गया, जो डर गया समझो फंस गया. So हमें इससे बचना कैसे? How to, whenever such kind of thing, because and this could happen with anybody, any intellectual, anybody. जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ मेरे साथ भी या किसी और के साथ भी हो सकता है. तो the only thing we need to do is stop. Whenever such thing happen, stop. जल्दी में नहीं रहना, कुछ भी हो जाए. Stay calm. Then think whether this is really for me, whether this is really for my family and my surrounding. Then act, and never ever give the document in the hurry. अपने डॉक्यूमेंट और पैसा चेक वैक कभी भी जल्दी में नहीं देना है. तो स्टॉप, थिंक एंड एक्ट. अगर ये 3 आप अगर फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर दैट you will able to just decrease the such kind of crime. And 1930 अभी बताया भी था, 1930 is the helpline, and cybercrime.gov.in is the site, and 1945 is also one of the helpline for them. Then you can call 1930 and 1945. And this is the example of deepfake. Is original, another is deepfake. Can you imagine that whether which one is original? Way that none of those failures I hope voice is coming would recur, because just the physics of how it's built. This is Yes, sir, an yes. example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could improve with more computing time, but 90% people cannot tell the difference. Can you imagine? क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल भी पहचाना जा रहा है, बिल्कुल भी पता चल रहा है कि कौन सा फेक है और कौन सा रियल है करके? नहीं. तो ऐसा ही है. सो इसको पता करने के लिए देयर आर डिफरेंट टूल जो हम लोग, जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होते हैं, उसको चेक करने के लिए जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क GAN करके टूल्स होते हैं. बट यू नीड टू बी मोर केयरफुल. व्हेनेवर सच थिंग हैपन, यू नीड टू बी मोर केयरफुल. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. फिल द जनरेशन गैप, पेरेंट, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स. इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ये जो फिशिंग है और ये जो इस तरह के क्राइम है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? बिकॉज द फ्रॉडस्टर टारगेट आइदर टीनेजर, आइदर चिल्ड्रन और द ओल्ड एज पीपल. उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. सो ऑल्सो एवरेज एज ऑफ बिकमिंग टीनेजर इज डिक्रीज बाय 1 year. अगर आपको पता नहीं है तो ये 1 साल कम हो गई है. सो
ऑनलाइन प्रेजेंस, और इनका ऑनलाइन प्रेजेंस, अभी छोटे बच्चे होंगे उनका ऑनलाइन प्रेजेंस वे बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। एंड डीफेक तो बच्चों में बहुत ही ज्यादा, डीफेक कब किसका डीफेक बना करके आपके बच्चे को वो लोग क्या कहते हैं अपने अपने ट्रैप में कब फंसा देंगे कभी पता नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऑनलाइन गेम्स, कई बार क्या होता है वी पीपल सेड नो यार व्हाट डू आई डूइंग विद द इंस्टाग्राम, व्हाट डू आई डू विद द स्नैपचैट, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। बट योर चिल्ड्रन, your friends, your family are using all these things, so you should know about this, what is happening in the Instagram, what is happening in the Snapchat, what is happening in the deepfake industry। so आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, डिजिटल वर्ल्ड, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रॉडस्टर बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े बैड पीपल बने हैं जो आपको बियॉन्ड योर इमेजिनेशन काम करते हैं। वो कब किसको फंसा देते हैं, कब किसको क्या बन के क्या कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता है। The only thing is to save yourself and your family and your kids is to make aware yourself। जागते रहो, जगाते रहो, मतलब be awake and औरों को भी जगाते रहिए आप। This is the only thing। So you need to involve in everything। So आप अगर इनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनमें जानेंगे नहीं, इनके बारे में जानेंगे नहीं, तो अदरवाइज इट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या हो गया करके आपके बच्चों के साथ या आपके बुजुर्गों के साथ क्या हो गया करके, कब उनके साथ क्या हुआ करके आपको पता भी नहीं चलेगा। So you should talk with each other. You should talk with, and this generation gap need to be filled between the grandparents and the parents and the children। इन सब के बीच में ये आपस में मिल करके, because the new generation people talks the differently and the old generation people talks differently। तो उन सब में कैसे generation gap को कैसे बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए, you need to see, because this is different for different people। So one formula will not work for everyone। तो ये सारे कुछ ट्रिक्स हैं जो ट्राई फोन स्कैम बहुत सारे लोगों को आते हैं, डिजिटल अरेस्ट के आते हैं, फैमिली मेंबर अरेस्टेड, बोल देंगे कि आपका फैमिली, आपका ब्रदर यहाँ पे अरेस्ट हो गया, आप हमें पैसे भेज दीजिए, while your brother is on the in the college, he is studying in college और उसका फोन स्विच ऑफ है, तो उसी टाइम पे दे आर वेरी 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 टारगेटेड। और जब से AI आया उससे तो और ज्यादा टारगेटेड हो जाता है, पता चल जाता है। तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। मिस्टेक, और कई बार ये भी आता है कि आपके गलती से आपके पैसे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, अब हमारा पैसे वापस कर दीजिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रैप। एंड बी एश्योर दैट आपके अकाउंट में एक्चुअल में आए हैं नहीं आए हैं। आपके अकाउंट में आए भी हैं तो उसको देने का तरीका डिफरेंटली हो सकता है, तो ये थोड़ा पॉज करें, स्टॉप, एक्ट एंड देन स्टॉप, थिंक एंड एक्ट, आप उसको फॉलो करिए हमेशा। KYC एक्सपायर का भी कई बार आता है और इनकम टैक्स रिफंड का भी कई बार आता है। सो यू नीड टू सी ऑल दीज थिंग टू अंडरस्टैंड। तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए, आपको रिपोर्ट, स्टॉप फर्दर कम्युनिकेशन, कभी भी इस तरह का हो जाता है, रिपोर्ट द इंसिडेंट इमीडिएटली, कॉन्टैक्ट योर बैंक, कीप एविडेंस। तो ये कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, AI में बताऊंगा कि AI आपको कैसे हेल्प करेगा इसमें। नेवर ट्रस्ट इन द अनसॉलिसिटेड कॉल, वेरीफाई द कॉलर आईडी। अगर आपको कई कॉल आता है, आपके घर से कॉल आता है आपकी वाइफ का, उन्हीं के फोन नंबर से आ रहा है और आपको कॉल आ रहा है कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं ये नहीं कहता कि आप ट्रस्ट मत करिए, बट इफ यू थिंक समथिंग फिशी कि उसने बोलना कुछ और था, वो कुछ और बोल रहे हैं, तो रीवेरीफाई मीन्स को कॉल करो। हो सकता है कि उनका फोन है कुछ हो चुका हो और कोई और कर रहा हो उससे कॉल, लेकिन जब आप आउटगोइंग करेंगे, जब यहाँ से कॉल करेंगे तब उनके पास ही जाती है, या डिफरेंट नंबर में कॉल करके पता कर लीजिए। जब भी आपको कुछ लगता है कि कोई चीज फिशिंग है, कुछ चीज अलग है, देन यू नीड टू वेरीफाई इट। डोंट ट्रस्ट विद द ब्लाइंडेड आई। सो इस ऑलरेडी ये विक्टिम तो लॉस बनी, क्या करना है, इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। ये मैंने आपको FIR कंप्लेन करना है, सीक हेल्प फ्रॉम द लॉयर्स, और आपके कोई IT एक्सपर्ट हैं तो उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे बात करके आप वो कर सकते हैं। ये मैंने बताया था, कीप काम, ऑलवेज बी कीप काम, वेरीफाई आइडेंटिटी, अवॉइड शेयरिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी हालत में। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर आप शेयर मत करिए कभी भी, अगर कोई किसी भी सिचुएशन में आ जाती है। तो यूज द स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर, इनेबल 2-factor ऑथेंटिकेशन, अभी बताया था, दो ताले होने चाहिए दरवाजे में। कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट, कई बार लोग सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते, सॉफ्टवेयर चलता रहता, वो पूछता रहता है ये अपडेट करो, आप पोस्टपोन करते रहते हो। फिर क्या होता है, एक दिन आपकी प्रेजेंटेशन हो रही होती है और वो आपको फिर धोखा देता है और वहाँ पर रिस्टार्ट कर देता है, आपके प्रेजेंटेशन के बीच में रिस्टार्ट कर देता है। सो यू नीड टू बी इंश्योर दैट कि उसको भी मेंटेनेंस की जरूरत है, आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, जैसे गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं आप, जैसे और अपनी मेंटेनेंस करते हैं। यू नीड टू डू मेंटेनेंस ऑफ योर फोन एंड योर लैपटॉप ऑल्सो। अगर नहीं करेंगे तो उसका सिक्योरिटी मेजर उसके पूरे नहीं होंगे तो हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
तो रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी होती हैं वो साइबर क्राइम में आपको रिपोर्ट करनी जरूरी है। एजुकेशन योरसेल्फ एंड अदर्स, औरों को भी बताइए और खुद भी उसको करिए। यूज ट्रस्टेड कम्युनिकेशन एंड चैनल, जो डर गया वो समझो फंस गया। सो प्रोफेसर संदीप, प्रोफेसर मिश्रा जी, हम लोग काफी देर से वो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये ना हो कि कहीं ओवर डेटा या ओवर डेटा फ्लो ना हो जाए, क्योंकि जब ओवर होता है तो डेटा फ्लो हो जाता है। सो वी हैव वन स्मॉल एक्टिविटी। तो हम क्या करते हैं ऑफिस में भी हम लोग करते हैं, जब हो जाता है हम लोग थोड़ा योगा टाइप का करना शुरू करते हैं, योगा करते हैं या थोड़ा आइस ब्रेकर करते हैं। तो मैं एक गाना प्ले करूंगा, जिस गाने में जो वो एक्शन कर रहा है, आप सब लोगों को भी वही एक्शन करना, ताकि वी विल गेट रिफ्रेश्ड। ओके, आर यू रेडी सर? Just a 1 minute, just a few second activity. Everybody, all the participant. I'm really sorry, मैं काफी लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। No. What we will do, we will give the switch on camera option to everyone now for just for 30 seconds, right? Yeah, just 30 seconds. Yeah. Now participant, they can switch on their camera. You switch on your camera, please, and you follow the step. What the steps are coming into the screen. आप उसको फॉलो करिएगा। एंड आपको अपनी सीट पे खड़ा होना पड़ेगा उसको फॉलो करने के लिए। क्या है, हम कई बार हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग अपने वेलबींग के लिए। शुड आई स्टार्ट? यस, देन वी नीड टू डू लाइक दैट ओनली, जो रूट कर रहा है। फिंगर सारी तरह की एक्सरसाइज है, जो रामदेव बाबा कराते हैं वो एक्सरसाइज भी है, सब कुछ है। फिंगर की स्पेशली यहाँ पे कंप्यूटर पे फुल यूज फिंगर, बॉडी, कंधे, पैरों की एक्सरसाइज। Come on, yeah. Thank you so much. Thank you. It's wonderful to see all of you. So, जो डेटा हमारे पास कई बार ओवरफ्लो हो जाता है ना, ओवरफ्लो होने लगता है, बहुत सारा डेटा के होने लगता है, तो हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमारा जो डेटा ओवरफ्लो जो जा रहा है वो थोड़ा सा लिमिट में आ जाए। तो नाउ वी कैन जस्ट गो अहेड विद द रिफ्रेशर थिंग, right? So this is the only reason just I went to the out of the box for this. So moving next. So now we are starting with the Digital Personal Data Privacy Act. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? DPDPA हम कहते हैं, बहुत लोगों ने इसका नाम सुन लिया होगा और बहुत लोग इससे पहली बार इसको जानेंगे भी। DPDPA एक्ट, ये इंडिया का एक नया एक्ट है, नया डाटा प्राइवेसी एक्ट है। ये क्यों है और क्यों बना है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी है। आप कहीं पे भी आप देखिएगा, कहीं पे whenever you go somewhere, maybe you are filling up some form or you are going for some travel, you fill the form। आप जैसे वहाँ फिल फॉर्म करके घर आते हैं, आप उसमें उनको अपने प्रेफरेंसेस बताते हैं कि I will eat while I'm on the holiday, I will eat that much of food, I will eat burger, I will eat so and so, I will eat pizza, you know। तो जैसे घर आते हैं तो आपको फोन आ जाता है, सर you would like to have a pizza, so we have a discount on the pizza। तो कैसे होता है ये सब? आपने फॉर्म इधर भरा, उधर आपको फोन आ गया, आप इधर आप वॉक करते हुए स्केचर की शॉप पर गए, उधर आपको जूते का ऐड आना शुरू हो गया फोन पे। ये सब कैसे होता है? This is all connected. This is called the data breach and data leakage without my consent. So this is huge actually. This is the reason I'm just trying to cover this DPDPA Act, little bit of DPDPA Act, and because when the sensitive data and the private data like social security number, bank account number, medical record, professional data like customer information, intellectual property and financial data accessed by the unauthorized party and is referred to as a data breach, उसी को हम data breach कहते हैं। अगर आपके जाने बगैर या आपके कंसेंट के बगैर अगर कोई डेटा लीक होता है, कोई यूज करता है आपके डेटा को, यूज करता है और उसका इस्तेमाल करता है पैसा कमाने के लिए या चाहे किसी के लिए भी या ऐड के लिए,
तो उसे डेटा ब्रीच बोलते हैं। द फ्रेज डेटा ब्रीच ओनली डिस्क्राइब द सिक्योरिटी लैब्स इन विच द अनऑथराइज्ड यूजर ऑब्टेन एक्सेस टू द डेटा। और ये कॉमनली क्या होता है, यूजर कई बार टेक्नोलॉजी फ्लॉ की वजह से होता है, यूजर बिहेवियर से भी होता है। जैसे सपोज आपने अपने फोन पे इनेबल कर रखा है कि मेरा इन्फॉर्मेशन और मेरे डेटा को आप ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ऑब्वियस सी बात है, वो अगर डेटा ले सकता है तो हमने दे रखा है कंसेंट, तो वो ले सकता है भी डेटा। फिर आपको इस तरह के ऐड दिखेंगे, इस तरह के कॉल्स आते रहेंगे आपको। सो दिस इज व्हाट सेम द डेटा ब्रीच। आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और वो यूजर का एरर या किसी के एरर है, वहां से वो चोरी हो गया डेटा, या टेक्निकल फेलियर हो गया। टेक्निकल फेलियर मीन्स कि किसी कंपनी का डेटा, आपका डेटा उस कंपनी में है, उन्होंने संभाल के रखा हुआ और आपने कंसेंट भी दिया है, एंड देन समबडी हैक देयर सिस्टम, तो उसकी वजह से भी डेटा लीक हो जाता है। तो हमेशा एक चीज फॉलो करिए, जब आप अपनी सीट पर नहीं होते तो अपना कंप्यूटर को लॉक करके रखिए, अपना फोन को लॉक करके रखिए। थिंक बिफोर यू क्लिक, कहीं पे भी क्लिक करने से पहले कीप इट प्राइवेट, अपडेट सॉफ्टवेयर, ये मैं आपको बताया। लेकिन ये डेटा ये शुरू कैसे हुआ? इट स्टार्टेड इन द 2017 सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया। द कोर्ट आल्सो रूल दैट द राइट टू प्राइवेसी अप्लाइज टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मीन्स कि जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा आधार कार्ड, मेरे से रिलेटेड मेरा बैंक अकाउंट नंबर, तो वो उस पर मेरा ही हक है, और मेरे पूछे बगैर कोई कुछ उसको नहीं चेंज कर सकता या उसको ले नहीं सकता। तो वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ओवर द ईयर इसमें चेंजेस आते रहे, लेकिन सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ निकाला जिसे बोलते हैं GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। ओके, दैट वाज इन May 2018. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, great. मुझे अब कई बार लग रहा है कि ऐसे हेलोजुलेशन हो रहा है कि मेरी आवाज जा रही। ओके, सो यूरोपियन यूनियन ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया था, और उन्होंने GDPR के नाम से एक लॉ बनाया था, जिसमें सिटीजन का उस कंट्री, जहां भी यूरोपियन यूनियन का ये लॉ रहा था, उस कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं उनका डेटा प्रोटेक्टेड हुआ था। उनका डेटा उस देश से बाहर तब तक नहीं जा सकता था जब तक वो उनका कंसेंट न हो, या उनकी गवर्नमेंट का वो न हो, ऑथराइजेशन न हो। सो इस तरह से ये यूरोपियन यूनियन में ये लॉ बना था। उसके बाद क्या हुआ, ये जब लॉ रहा, ये काफी सक्सेसफुल रहा। तो सक्सेसफुल होने के बाद हर कंट्री में अक्रॉस द वर्ल्ड सबने बोला कि हमें भी बनाना है। तो इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग दैट, एंड ओवर द ईयर डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट हैज बीन बिकम ए एक्ट। राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद अगस्त 2023 में ये एक्ट बन गया, एंड नाउ द रूल्स आर गोइंग टू नोटिफाई। अभी रूल्स वगैरह नोटिफाई हो रहे हैं। इन 2025 दिसंबर में एक्सपेक्टिवली रूल्स भी आ जाएंगे, तो एवरी कंपनी हैज टू कंप्लाई विद दैट। फिर आपका डेटा आपके कंसेंट के बगैर कोई यूज नहीं कर पाएगा, तो वो रूल बन जाएगा। सो इसी तरह से कंपनीज भी, लाइक इंस्टीट्यूशन कंपनीज ऑल्सो कमिंग अप विद देयर पॉलिसीज, क्योंकि उसे कंप्लाई होना पड़ रहा है। उसे अगर कंप्लाई होना है तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में या अपने इंस्टीट्यूशन में एक डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी जो उसको कंप्लाई करेगी। उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके सारे फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को हमें पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज जो मैक्सिमम पेनाल्टी है इसमें 250 करोड़ रुपए की पेनाल्टी है अगर डेटा ब्रीच होता है। तो 250, अगर हम फॉलो नहीं करते, उनके रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते और डाटा ब्रीच हो जाता है, तो 250 करोड़ रुपए तक का पेनाल्टी है उसमें। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो वाई डेटा प्रोटेक्शन मैंने बताया था, कंपनी एज पर कंप्लाइंस एज पर लॉ, इंडिया डिजिटल पर्सनल डेटा प्राइवेसी एक्ट है, रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। अगर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अगर चले जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। और पॉलिसी और मैनुअल को कंप्लाई करने के लिए भी हमें बनाया जाता है डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन एंड द ब्रांचेज, अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, तो उन सबको कंप्लाई करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए हमें डेटा प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कुछ क्लॉजेज हैं जो वाइडली अडॉप्ट हो रहा है, और कुछ बेसिक क्लॉजेज हैं। देयर इज ए लॉट। पूरे एक दिन का इसका अगर हम बात करें तो तब जाके भी खत्म नहीं होगा DPDPA। तो कुछ की चीजें हैं जिसमें एक DPO अपॉइंटमेंट की, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना है हर ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए। और कंसेंट फॉर्म, अगर मैं कहीं भी किसी का डेटा ले रहा हूँ, सपोज मैं आपका डेटा लेता हूँ कहीं भी, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, so I'll have to take the consent from you that I am taking your data and I will use for this much purpose, and I will just keep this data for that much long of time or any time. It's your rights that your right, मतलब जिसका हम डेटा ले रहे हैं उसका राइट है कि वो कभी भी हमसे कह के हमारा अपना डेटा डिलीट करवा सकता है। So these are the few basic things which I am telling you. There are a lot of things, a lot of other things as well.
So this is what the DPDPA. Now I'm going to cover a little bit of cyber security and use of AI in the digital era. This is very very important topic क्योंकि AI को use करना है या नहीं करना है. This is also one of the debate. Many of people are still on that debate. और कुछ लोग AI में इतने आगे पहुंच चुके हैं कि उनको आप छू भी नहीं पाएंगे. तो अगर मैं आपसे कहूं, if I say something are impossible to believe, like if I say, can we get a blood test report without taking a blood from the human being? आपके शरीर से खून निकाले बगैर मैं क्या आपका ब्लड टेस्ट कर सकता हूं? Yes, no, maybe, or can't do it. You can type your answer in the chat. No, very good. No. बिना ब्लड निकाले नहीं कर सकते. No, impossible. Thank you for response. No. So this is the screen. No needle, no pain. Just a face scan. India launches the first AI-powered blood test. Just look at the camera and the sample a blood test without a blood. ये लॉन्च हो चुका है इंडिया में. अगर आपने देखा है तो इंडिया गवर्नमेंट के साथ होकर के नीलोफर हॉस्पिटल है एक हैदराबाद में. Okay, using the AI face scan, blood pressure, heart rate, oxygen level, sugar level, even stress and more, all without drawing a single drop of the blood. No labs, no waiting, no fast, painless. इसे backed by the AI. और इसका नाम दिया है अमृत स्वास्थ्य भारत. This is non-invasive AI tool is called अमृत स्वास्थ्य भारत. तीन सिंपल से स्टेप है इसमें. ये हाई रिजोल्यूशन कैमरा होता है, AI एनालिटिकल फेशियल ब्लड फ्लो होता है, विद इन 20 to 30 सेकंड इट जनरेट ए फुल हेल्थ रिपोर्ट. सो कैन यू बिलीव दैट? सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी हैपन इन द वर्ल्ड. हम लोगों को कई बार पता ही नहीं रहता कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, और ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है करके. we have a lot of report. There is a huge report. You can just search on the Google and then see the newspapers also. There is a report on that, how this happening and who is doing that. Okay, if you need more detail, then you can message me personally, then I can give more detail about it also. So artificial intelligence, AI in action. Basically, why I am saying the AI in action. So how we can, it will unfold in the coming slide. पहला क्वेश्चन होता है in our industry, in our offices, in different should I use AI tool or not? तो कई बार क्या जवाब आता है? Big no. क्योंकि लोग मेरी ईमेल को देखते ही कहने लगते हैं चैट जीपीटी, आई स्टॉप यूजिंग AI नाउ. क्योंकि लोगों के डर से लोग कहने लगते हैं यार चैट जीपीटी यूज कर रहा है, ईमेल देखते ही पता चल जाता है कि चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, सो आई स्टॉप यूजिंग इट. सम पीपल से पता नहीं ये प्रॉम्प्ट क्या नहीं बोला है. अब इस उम्र में क्या हम ये प्रॉम्प्ट सीख सकते हैं? कुछ प्रॉम्प्ट एक होता है AI में, तो वो क्या है? तो लोग कहते हैं कि ये इस चीज को हमने नहीं सीखना है ये, और मैं बिना AI के भी कम्पीट कर सकता हूँ. कई लोग कहते हैं कि हम बिना AI के भी हम कम्पीट कर सकते हैं, चाहे मुझे डबल टाइम क्यों नहीं लगाना पड़े. ये भी कई लोगों के स्टेटमेंट रहते हैं. और कई लोग ये कहते हैं AI यूज करके क्या कर लोगे, कितना ऊपर उड़ लोगे, लेकिन आई विल यूज माय ट्रेडिशनल अप्रोच एंड देन will able to catch you. Sir, English also will be desirable because okay students are from outside. Sure, I will use. So some content is in Hindi, so I was not aware. So some content is in Hindi, so I will try to just convert into English most of them. So what is this? Can anybody tell me what is this? बहुत लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई है. Everybody, many of the people, IT people who just gone through this Dalmia, they will be RJ45 Cat6 server, RJ45 data, BCA. Okay, so many people said different things, data cables, Ethernet cable. So I will take you in the different angle. This is the data and information in today's world. This is the data and information in today's world.
spread across the devices and the cloud. ये हमारा डेटा है जो जगह जगह पे फैला हुआ है, बहुत पूरी दुनिया में फैला हुआ है हमारा डेटा। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि इस डेटा में से पर्टिकुलर एक फाइल आप निकाल के दो, आप मुझे कैसे निकाल के दोगे? आप उलझ जाओगे उस जाल में। You will be stuck somewhere in that. You will not able to find that particular one file. Or if I say you have that much of the 10 PDF files or the 10 books, and you need to make the summary within 2 days or 3 days. Will you able to do that? How will you find the summary of this data? By reading all these confusing steps. How long it will take? कितना time लगेगा इसको करने में? Because you can see that this is very, very confusing, and this is the reality of our data in the cloud, in the servers, in the phone, in the laptop also. If you see your phone, if you try to find your photo, then you will say, oh my god, I had the photo in the phone, but I don't know where is it. आप उसमें से भी नहीं ढूंढ पाएंगे. So I have a small story for here. You know about the चील, kite जो होता है, वो क्या है? That kite, the flies in the sky. Okay, when he flies in the sky, there is a bird who always teaches him. मतलब ऊपर से आकर के उसको काट देती है, बार-बार काटते हैं. But the kite still continue to fly in the same pace, but still this bird goes and troubles that kite. So ultimately what kite does? Kite do not retaliate. वो उसको मारता नहीं है. वो अपने पेस बढ़ाता है and then और ऊपर उड़ने लगता है. And he goes up and up, and he goes again up and up. वो अपनी स्किल बढ़ाता है और ऊपर जाते रहता है. And then the other bird try to catch him and try to teach him or try to just उसको परेशान करने की कोशिश करती है. But क्या होता है ultimately, क्योंकि उसकी स्किल नहीं होती है और वो जाकर के अपने आप एक हाइट से आकर के गिर जाती है. Because at a particular height, that particular bird is not able to sustain herself, but that kite able to sustain himself at the height level also, at the top of height level also. So the kite do not retaliate. वो कभी भी उस पर आक्रमण करते हैं या उस पर retaliate नहीं करता है. वो only he increase his skill और एक ऊपर तक उड़ते जाता है. तो इसका मतलब क्या है? Why I am saying this? वो अपनी स्किल्स बढ़ाता है. आगे बढ़ने के लिए वो अपनी स्किल्स बढ़ा रहा है. He increases his skill in the form of the wings. अपने पंखों के फॉर्म में अपनी स्किल्स बढ़ाता है, अपनी ताकत बढ़ाता है. He do not retaliate. कहते रहते हैं लोग, कहते रहेंगे कि आपका चैट जीपीटी. आपसे लोग कहते रहेंगे कि यार तुम एआई करके क्या कर लोगे या कुछ और चीज करिएगा. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द एआई. This is the one of the thing. There are number of other initiatives which are coming in the world. So आपने अपनी skills बढ़ाने. You need to sharpen your skills. Mahipalji, we have 15 minutes approximately left with us, and at least 2 to 3 minutes we need per question answer. Yes. That is just I'm going to finish it fast. So basically, the moral of the story is that we need to increase our skill. हमें चील की तरह अपने पंखों को साफ करना है और अपनी उड़ान आय को बढ़ानी है. This is the digital world. You will soon be able to see the digital world in this form. And data is the currency and information is the lifeline. And what is artificial intelligence? This is the story of artificial. I hope you will be able to understand the artificial intelligence, why it is important. And because this is a machine learning. It read it from the data and then give you the meaningful information. Typically, whatever need by the whatever. Suppose we need to perform a task and we need the human brain or human intelligence for that. So again, the AI is also doing the same by analytical skill. So basically, if we say that what is AI, अगर आपको समझ नहीं आया अभी भी, this is AI. So what is AI? AI is nothing but a shakalaka boom boom. Okay. So a small story. अगर अभी भी समझ नहीं आया तो, this is the story of a university lecturer. Okay, Professor Bhagirath, and a dynamic personality with the intellectual brilliance who completed his studies
a few decades ago is now a senior member. अब उनके challenges हैं, वो एक professor हैं, अब उनके challenges क्या हैं? He was happy and educated and he designed the curriculum for the student. अब challenges क्या हैं? These are the challenges, and challenges are a challenges to preparing the learning material for new generation student. The young staff do not pay the attention in the training, and collaboration is difficult. And पता नहीं हिंदी में कहते हैं, I don't know कि ये नई generation वाले कौन सी भाषा समझते हैं. Every time I can't give a chance to give the live demonstration. और ये कई बार फिर ये भी कहते हैं, अरे यार काश मेरे पास जादुई छड़ी होती है और साका लाका बूम बूम करता है और सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है. इससे इम्पोर्टेंट द लास्ट वन, मेरी तो कोई सुनता ही, nobody listen to me. ये कई बार होता है. So these are the things. तो what happened, जो भागीरथ जी थे वो स्पिरिचुअल फैमिली से थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने बचपन से ही कहानियां सुनी हुई थी कि कोई भी समस्या का अगर हमने समाधान लेना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है. So he left the job and he decided to go to the jungle. वो जंगल की तरफ चल पड़े और जंगल की तरफ चल के उन्होंने देखा इतना सा अच्छा सा झरना, इतना निर्मल झरना, निर्मल पानी, अच्छी सी हवा. She started doing the meditation. भगवान की भक्ति में बैठ गए. उन्होंने कहा कि यार मैं भी इस समस्या का समाधान लेके चलूंगा. तो एक्शन और सॉल्यूशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. बहुत मुसीबतें आई, जंगली जानवर आए, ये आए, लेकिन वो डिगे नहीं और उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी. और तपस्या जारी रखी तो फाइनली हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ. किसी भी फॉर्म में हो हार्डवर्क हमेशा कुछ ना कुछ देके जाता है. एंड देन फाइनली इट्स द टाइम टू गेट रिवार्डेड. और भगवान आए, भगवान ने उनको एआई का कंप्यूटर दिया और एक कंप्यूटर इंजीनियर दिया. बोला बस जाइए, ये आपका समस्या का समाधान करेंगे. एंड देन रिटर्न विद द सॉल्यूशन, स्माइल ऑन द फेस. And this is the transformation with his intellectual brilliance and with the computer and the AI system, he is able to crack all these things. So I'm really sorry, I'm just going fast, but this is and we are already running out of time. So personal learning path, these are the things we can achieve from the AI. And there are number of AI tools you can use, and one of them is Copilot. I'm using Copilot because it's authorized in the organization, so you can use whatever is authorized in your organization, and you can use the free tools also for your personal use. So how AI can help someone become a victim of cyber? अगर आपको, मैंने एक AI को prompt दिया कि कैसे ये AI जो है help कर सकता है आपको अगर कभी किसी के साथ fraud हो जाता है. तो I give the same prompt. You are a cybersecurity expert. Please help me. My friend has a victim of UPI cyber fraud of rupees 10,000. His bank name is SBI, and what to do next? कई बार क्या होता है कि जब हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो हमें समझ ही नहीं आता क्या करना है. तो आप इस AI से, आपके फोन में भी AI है, आप सबकी जगह आप इसको पूछ सकते हो फॉर द इंफॉर्मेशन, एंड इट गिव्स ए ब्यूटीफुल समरी ऑफ दैट कि आप रिपोर्ट कैसे कैसे कर सकते हैं करके. आप इस पर कॉल करिए. दिस इज द वे हाउ द इट रिप्लाइज. उसमें कहता है कि आप बैंक को ईमेल लिख दीजिए और बैंक में उसमें साइबर फ्रॉड में कंप्लेन कर दीजिए, ये सब बताता है. तो उसके बाद व्हाट यू कैन डू, अब वो कहता है कि आप ईमेल लिख दीजिए. नाउ यू डोंट हैव द टाइम एट दैट पॉइंट इन टाइम कि आपको मेल लिखनी है. देन यू कैन आस्क देम कि आई नीड ए फाइल ए कंप्लेन, प्लीज हेल्प मी टू ड्राफ्ट ए कंप्लेन लेटर. वो अपने आप ड्राफ्ट कंप्लेन लेटर ड्राफ्ट करके देता है विद इन 10 सेकंड. एंड you have a letter and you can directly send to the bank by putting your account detail and all. So this is how it helps. So basically things to consider while using AI: be clear and specific, provide contents, define the format you want it to have, and ask example step by step. Basically in conversation mode जाना पड़ता है हमें. एक चीज पहले पूछा उससे, फिर दूसरे, जैसे हम आपस में बात करते हैं वैसे conversation mode में आना होता है. We need to go to the conversation mode while using AI. So the key takeaway, this is the last slide. This is the key takeaway. How AI can contribute to fight against the cyber fraud in the bad and the bad player. We all have the better understanding of phishing, understanding of cybersecurity. We as an end user should remain vigilant, and we will all work towards the building the cyber secure culture, understanding how DPDP impacting our work and good way forward, and the benefit of using of AI tools. So this is what. Thank you so much. I rushed little bit fast at the end. So this is what. If we have any questions, we can take questions. MP, sorry. I think there are many questions by the participant. If you can look at the chat window, you can pick few questions. For example, if you start from the last one, Manoj Kumar, he's a student of our MCMU program who has enrolled in 2023.
So he asked the question: how can individual and organization truly control or secure their digital lives, regaining controls, altering unsafe habits, and ensuring lasting cyber security without sacrificing innovation or digital freedom? That's a great question, Manoj. Thank you so much for asking this question. Basically, the answer of this question is that multiple answers, because you talked about a lot of things. So at the organization level, we need to adopt the security tools, cyber security tools. Lots of tools are there in the industry where we can adopt these tools and we can use these tools to safeguard our organization. And the most important part, what I said, that the training and awareness, this is very very important, because if the hacker and the bad player try to invade the end user. They always try to just target the end user who are the weak point. Okay, we need to ensure that we need to give everybody, most of the these vulnerable people, a regular training session, and the demo and simulation as well. So this is how we can just safeguard ourselves and our surrounding and our organization. I hope I am able to answer your question. Mr. Mahipal, some question from some students were there. I am not putting the word exactly, but in crux, their question were that how to identify the reliable Wi-Fi provider. If I am going to a 5-star hotel, will that be reliable? And similar like that, many places where we can trust the system or the organization. And some question related to that, how I identify if my email from some reliable sources is going in spam, then what is the way to identify that whether it is really spam or it is the genuine one? And the third question is that career opportunity in cyberspace, some student asked, and they asked that what is the ecosystem or environment in the India for that, especially for the doing some kind of internship or something related to that, and how we Indian in the cyber security place ourselves compared to global context or global level. So these are the few questions. I have summarized these questions and directly asking all these in one go. You may answer the few as per Yeah, your there are a convenience. lot of questions. Thank you so much for summarizing, sir, for these questions. So I will not able to answer every question, but still I wanted to just summarize this. So the opportunity in the cyberspace is lot of the opportunity is there for the internship also. So my request is you can see my credential on the in the PPT, and then you can contact me. I will try to connect you with the correct organization and the people who can just give you the correct path of the cybersecurity. Okay, and there are a lot of organization and lot of courses which can just lead you to the proper path for the in the cybersecurity world. And about the security of the email and all. So this is, if your email is going to be spam in the another system, it might be possible that, because it depends on the individual to individual organization. If my organization has strict policy for the email to receive, then it might possible that your email can go into the spam. But how you can just avoid all these things, avoid the many links and the different links on your email. Try to just make it simple and target it. Okay, then you will able to just send the email. If there are a lot of links, there are a lot of images in your file, and the chances are going to be more into the spam. So these are the few things you can just take care think of. And there are other questions also. I will request to just send these email to me individually, and I will just reply individual each and every question individually, just interest of time. I think there was one more questions at the end. If you can see at the end, he's a student from, I think they are the student from our South African countries. Okay. Maisara, if I hope I'm pronouncing his name correctly, Maisara Ali Shehu. So he's a student of BCA Online, and his question is: as AI continues to evolve and threaten many jobs, is it possible for AI to
also take over cyber security roles? Yes. Thank you, Mishara. Thank you for asking this question. So we have also the office in South Africa. So we used to deal with these people in the South Africa as well. And so this is very good question, because normally this is a misconception that AI going to take the jobs. Okay. So if AI not going to take the job, AI will generate more and more jobs also. Okay. Only the thing is that you need to just walk with the situation, and walk with the current trend and all. Okay, so their new job will be generated. In the 1980s and 19, when computer came up, the people said the same thing, that the computer will take our job, but the new jobs will come up, like the programmer and the infra manager, the engineers. There are a lot of new jobs came up. So similarly here the new jobs will come up. And I told you during the presentation that there is a flip side of that also. AI can help in the cyber security as well. Like I said, if something fraud happened to somebody, then AI is immediately give you all the options, that how you can protect yourself and how you can save your money going before going into the hand of the fraudster. So similarly, there are flip side also, because hacker are also using the targeted attack, like using the AI. They are the more targeted attack. You will not able to find out whether it's a phishing mail or whether it's a real mail. So it's all about the education and stay awake, like jagte raho, jagate raho. So this is how we need to just think about. So with this, I think we may bind up the session. So before we winding up the session, I have a 15 minute of quiz. If you allow me, then I can run a quiz and they all will enjoy. This is all from this session, and we have a 3 goodies also for the 3 people who will won the thing. Okay, I think we may go, Professor Sandeep ji. I think we We may can. go with this. And So guys, do not leave now, because expert is conducting a quiz, and based on this, I think top 3 is going to get the some goodies from him. So what he will do, he will send it to the school, and from the school side, we will ensure that it reaches you. Okay. Yeah. So I'm just sharing my screen again. Just give me 1 second. So these are the quiz rules. So basically, okay, you need to ready with your phone or the laptop where the internet is working, and you need to type https://kahoot.it. So I will give you the QR code also. So these are the rules. Basically, you can take the picture and then you can read later on also. So I'm starting the quiz. Just a minute. Is this quiz for everyone, including Yeah, this quiz is for everyone. Anybody can play this quiz. Okay. Even you, Professor Sandeep, you can also play this quiz. Okay. Because this has been made by me only, so nobody knows about these questions. So Great. Great. Okay. this is the QR code. You can scan it and you just write your full name. Basically, if you write the full name, then you will able to know that you are the actual winner. Great. Come on, fast. You can type the code. Yeah, it's a 391720, guys. 391720 is the game pin. $92 है.
Come on. We are going to start in another 30 seconds. आप लोग बाद में यूज कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं. The quiz is all about the what we discussed in last 1 hour. Should we start? Please start. Other people also can join in between. आप बीच में भी join कर सकते हैं, just interest of time. A cyber safe culture we must adopt. First is the poll. Okay, this is the poll only. Okay, after this session, how confident you are about your cyber security knowledge? 30 seconds you have. This is the poll. There is no marking for that. There is no numbers for that. How confident you are about the cybersecurity knowledge? Great, I am confident now you can educate others. Very good, 19 people said they are able to just teach others also. That's the good. The second poll question. This is again the poll question. Have you heard these words before? Digital arrest, phishing, MFA, 2FA, DPDPA, ये सारे वर्ड पहले सुने थे आपने? इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें जो जितनी जल्दी आंसर देगा उसको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. एंड बेस्ड ऑन दैट द होल थिंग विल रन. Fastest fingers first. Fastest finger first. Yes, you are right. Oh wow, good number. I heard about this, but it's good. That means the session is really needed for everyone. So now the real questions are starting. In every dash, a cyber attack occurs somewhere in the world. How many seconds? Fast. 23 people. Other people who are not joined, they can join using the kahoot.it. The game pin is written below. 3, 4, 2, 1, 0. 23 people said it right. Good going. See the leaderboard. These are the top 5. I'm moving ahead. This is very initial. Let's see. It's a double point question. What is the maximum penalty for the data breach under DPDPA? अभी बताया था last में. What is the maximum penalty for data breach under DPDPA? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jaldi, 0. 16 people said right. 12 people said right. 230 crore. Confusing tha, huh? No problem. Jagat Kumar is number 1. Madan Gopan Singh, Manoj Kumar, Chauhan, Kamran. Very good going. Let's move ahead. This is again the double question. Which of the following is not a cyber security best practice? कौन सी इसमें से साइबर सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है? बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है. जल्दी में मत करना. Be calm, stop, calm, act. Wow, 31 people said right. Locking your system when you are away. Anyway, good. Enabling two-factor authentication is enabling two-factor authentication is the good practice. I said not. Good. Next. What slogan promotes cybersecurity around you in office and wherever you go?
वही हमको करना है। पोल में भी वही आंसर आया था। 7 6 5 4 3 2 1 0. Wow. Very good. Be alert always. Yeah, we need to be alert always. But I talked about the slogan, which is the slogan we promote. Stay awake, keep awake. जागते रहो और सबको जगाते रहो. Next, double point question. What is the recommended action when connected to an open Wi-Fi? ये क्वेश्चन भी था. ओपन वाईफाई में हम कैसे पता चलेगा कि ओपन वाईफाई है या नहीं है? अगर किसी में पासवर्ड डाले वगैरह अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो ओपन वाईफाई है, उसको कभी कनेक्ट नहीं करना है. और जो होटल के वाईफाई होते हैं वो सिक्योर होते हैं, बिकॉज ओटीपी मांगते हैं या आपका रूम नंबर और वो सब मांगते हैं. दे आर सिक्योर्ड. अवॉइड एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. वेरी गुड. इट्स अ गुड वन. V for victory, but we don't know the name. What is the purpose of Digital Personal Protection Act DPDPA in 2023 in India? सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया था ना? Did you remember? 2017. 5 4 3 2 1 0 done. 47 people said it right. Wow, very well done, very well done. सर लॉ के स्टूडेंट भी हैं आपके इसमें, इसका मतलब. नेक्स्ट क्वेश्चन. It's a double point. What does 2FA, two-factor authentication, typically involve? Two-factor, दरवाजा, चाबी, ताला, याद है? Wow, a password and the second verification with a light phone code. 44 people said only password. One person said only password also. Very well done. Great going. What is the key feature of AI? Key feature. Key feature. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 29 people said it right. It can think beyond the human. It can't think beyond the human. आदमी को कभी पीछे, इंसान को कभी पीछे नहीं कर पाएगा AI. This is one of the questions also कि क्या करो, कोई क्या उसको पीछे छोड़ पाएगा? नहीं. Because people, the human has the power of imagination, जो उसके पास नहीं हुआ है अभी तक. इमेजिनेशन, इमेजिन कर करके वो कर सकते हैं. पावर ऑफ इमेजिनेशन. वी फॉर विक्ट्री. मनोज गोपाल सिंह जी, अंकित ठाकुर, कालसन, जगत कुमार. डबल पॉइंट क्वेश्चन. हु कैन यूज योर पर्सनल डेटा एज पर DPDPA? कौन यूज कर सकता है आपका पर्सनल डेटा? देख के करिएगा. ट्रिकी क्वेश्चन है. वाओ, 39 पीपल सेड इट राइट. कंसेंट चाहिए, बिना कंसेंट के कोई यूज नहीं कर सकता. राइट. वी स्टिल नंबर 1. What is a digital arrest scan? Zero, 1. Wow, 37 people. काफी अच्छी यहाँ पर नॉलेज है आप लोगों को. वेरी वेरी गुड. आई लव टू हियर दिस. मदन गोपाल सिंह जी, वी नीचे चले गए अभी. विक्ट्री MP.
What is the common tactics used by the phishing in the phishing email? Common tactics कौन सी होती है? What is the common tactic used in the phishing email? Offering free antivirus software, sending emails to the verified domain, providing cybersecurity tips, creating urgency and request immediate action. वाह, कई बार जो हरा सिग्नल होता है ना, ग्रीन सिग्नल होता है, वही रेड सिग्नल बन जाता है. 19 sending email to verified domain. Again, Jagat Kumar number 1, Pratham Arawat, Madan Gopal Kirti, Subbu. Last question, double point. Let's see who cracked the things. What is the main goal of cybersecurity mission described in the presentation? What is the main goal of cybersecurity mission described in the presentation? शुरू में ही बोला था मैंने. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Done. Very well played. 41 people. Approximately 90% people said it right. Very good. So, what do you think? Who is the number 1? Definitely, I am not the number 1. First, number 3, Subbu. Oh, congratulations. 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 Pratham Arawat. And number 1, Pratham, we can ask them to switch on their camera. Jagat Kumar. Can you all three please switch on your cameras? 1 minute. You can take Jagat, photos also. let me just check Pratham Alawat. Huh? Yeah. Pratham Alawat, you can switch on. And who is the second one? Number 1, Pratham. Jagat. Jagat. Jagat, na? Jagat and Subbuji. Yeah, Jagat is there. 1 minute, Jagat. Subbuji, anyway, he's here. He's a faculty. He's a professor and director PNDD. Wow. So, Great, sir. Very well played. Very, I'm very not well able to played. see Jagat. 1 minute, huh? Jagat, can you see where exactly the Jagat Kumar? Yes, right. Jagat Kumar. Jagat Kumar, you can also switch on your camera. और आप लोग कहाँ से हैं? जगत कुमार and प्रथम आप कहाँ से हैं? Pratham, maybe you can just introduce yourself, which program you are in, and Good evening, sir. I am from DCA Noida Regional Center, sir. Great. Congratulations. I will request Mahipal ji to stop sharing so that we can have a. Okay. Yeah. Okay, Jagat Kumar is a PhD student in computer science. Okay, great. So Jagat, you can switch on your camera. Okay, you don't have a camera. Okay, so maybe probably he has some technical. He is a PhD student in the computer science. So yeah, So what is the location, Jagat? location He is in NCR, Noida. Noida. So Okay. today is for the Noida. Yeah, Right. right. That's great. So great. It's great. Thank you so much. This is all. And over to you, MP Mishra ji and So thank you, Mr. Mahipal Baldia ji. It has been really very interactive and very nice session. And one thing I noticed that throughout the session, 100 plus participants were there, and it is somewhat sometimes very rare that whosoever joined, they were stuck to it. And moreover, in between also some people join and they were throughout the Others session. can also switch on their camera. So, we are thankful to you, and formally I request Professor V.V. Subramaniam sir to propose vote of thanks from sources. Subbu sir. Thank you. Respected speaker, distinguished faculty members, dear learners and colleagues, it is my privilege to extend the vote of thanks on behalf of SOCIS IGNOU New Delhi at the conclusion of today's presentation on Control, Alter plus Secure, a cyber-safe culture we must adopt of the Knowledge Transfer Series 2.0. At the outset, I wish to place on record our profound gratitude to Professor Uma Kanjilal, Honorable Vice Chancellor IGNOU, for her vision, constant guidance, and for according the necessary approvals to organize this webinar.
Her encouragement has been instrumental in fostering academic initiatives such as the KTS, which provide an excellent platform for meaningful intellectual exchange. Our heartfelt thanks goes to distinguished speaker, Mr. Mahipal Waldia, manager, Japiago, affiliated with Johns Hopkins University, for delivering an insightful lecture on today's topic, a cyber-safe culture we must adopt, control, alter, secure. The way that you have delivered the presentation through storytelling is extremely good and appreciated by all our students. Towards the end, we enjoyed the quiz through the online platform Kahoot. Your valuable insights and expertise have inspired us to embrace stronger digital practices and foster a culture of cybersecurity awareness in our professional and personal lives. I also wish to extend special thanks to Professor S.S. Rawat, Director, School of Computer Information Sciences, for his constant support and encouragement, and to Professor M.P. Mishra, Coordinator for this lecture, for his dedicated efforts in conceptualizing and coordinating today's session. Their guidance have been pivotal in ensuring the success of KTS 2.0. I would like to extend heartfelt thanks to all our learners pertaining to CIT, BCA, PGDCA, MC and PhD programs, as well as to our respected faculty members for their keen participation and for engaging in the thoughtful, provoking discussions that followed. Your presence and interactions have greatly enriched the proceedings of this event. A word of appreciation is also due to the organizing committee and technical team of SOSIS whose efforts meticulously ensured the smooth conduct of this particular lecture. Finally, I wish to acknowledge the constant encouragement and guidance from the leadership of IGNOU, which makes initiatives like the Knowledge Transfer Series possible, thereby providing our academic community with opportunities to engage with distinguished global experts. With these words of gratitude, we formally bring the sessions to a close. We look forward to your continued participation in the forthcoming lectures under the KTS 2.0 series. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. And I think, So formally, we may close the session. yes. And So once again, thanks to one and all. thank you, Mahipalji, once again. And those who have submitted their feedback link. So at the school level, we will verify whether you have registered. And based on the attendance and based on the feedback we have provided, certificate will be sent it to you in 3 to 4 days time. Okay. So thank you very much. Till next time, be safe. Yeah. Thank you. So thank you.